I must also that there is no alternative to good governance. Good governance is the key solution of the so many problems. This is the most awaited and also the most complex issue. We have to learn every day and from everyone to make it better and better. Good governance starts from good intentions. It survives on lasting institutions and reaches across national boundary and even beyond. Quality of life, business environment, and economic growth, they all finally depend upon effective governance. Lack of good governance is like the problem of diabetes. It provides home to many other ills affecting all organs of the body. I keep saying that good governance is always easy and effective governance. Old structure, we used to have a governess at home for the kids and all. So what is governess? So the governess is someone who actually takes care of the children. Like she's almost like a nanny and who... Nanny. Huh. After that, but when you speak about governance, otherwise, what is governance? So it can be Question anyone who is very relevant, but they have- guiding and leading something. Like for an organization, CEO can be the guiding. Because the answer of this question is, it may sound very complicated, but it's very simple. It's very simple. On a daily basis, I hear about like we have to make so many new strategies, we have to come out new rules, new Lokpal bills, and so on, all other things. But believe you me, governance is something beyond. Something beyond. It doesn't require any of these things. We have enough of rules in our country. And if you speak about country, for example, we have enough of rules. We have all the rules in order. We have constitution. We have constitution is, I mean, well-defined constitution. We have taken care of all the strategies also. We have taken care of the strategies followed in the earlier time to the latest time. But when you speak about governance, it only needs one thing, that is called execution, implementation. So to me, governance basically means implementation of the rules, if they exist. If there are no rules, then definitely it's anarchy. But when you speak about governance and the rules are there, then there is nothing to do. The only thing is you have to willingly, first of all willingly, you have to implement all the rules properly. This is the only requirement of good governance. Right? And one other factor, which is basically an essential part, which may not be available in the books, which may not be there in number of well-defined strategy books on nothing, that is called sensitivity. The person who is governing, who is basically in the post of, or who is basically in the position of, it can be a person, it can be a CEO, it can be a organization, it can be a group, it can be a government, whatever you say. There is one thing which is called sensitivity. So if the person, organization, the group, the HR, whatever you say, is sensitive, then I think all the problems will be solved. I am very sure about it. It may sound like very strange to you that like as a head of premier most business school, I am saying so. But believe you me, I do not know much of governance, I do not know much of politics, I do not know much of strategy. I am an ardent follower of Almighty. But one So you're being very humble right now. whatever I am saying is basically from the core of my heart I am saying. And I believe in that only. And believe you me, there were times when I used to think to be successful, like you need not be honest. Honesty will not pay. There are so many good things which will definitely obstruct your success. But today I can say with a more confirmed belief in Almighty that all these things matter. For example, on my board, if you just see, there is a statement says truth prevails and honesty wins. How many of you believe it? May not be. Maybe some of you may not be believing that. If I say emotions are always for the good thing only, some people say emotions are our weakness. Some people say, but believe me, sensitivity is one thing. Emotions are other thing which definitely pays you. For example, while taking the work,
while governing a society, while governing a college, while governing a firm, while governing an organization, if you think about sensitivity of the people with whom you are working, sensitivity of the people for whom you are working, of all the people with whom you are working and for the people whom you are working, if you are sensitive enough, if you know, but at the same time you have to be strict also, you have to take care of the rules also. I have told you, all these things within the framework of the rules. I am very sure you can do very good things. देखा गया है कि चुनाव से पहले लोग जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं या पार्टियां जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहती हैं जनता से बहुत वायदे करते हैं कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन जब जनता उनको वोट देकर पावर में जिताती है तो वो अपने सारे वायदे भूलने लग जाते हैं। और होता क्या है कि उनमें आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि हर एक कहता है कि मुझे मिनिस्टर बनाओ, दूसरा कहता है मुझे मिनिस्टर बनाओ। और फिर जब वो मिनिस्टर भी बन जाते हैं, सारी उनको पावर मिल जाती हैं, तो वो सारा कुछ अपने लिए करना शुरू कर देते हैं, देश के लिए या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। और इतने में जो उनको जितने पीरियड के लिए इलेक्ट किया गया है वो पीरियड ख़त्म हो जाता है और फिर वो नए चुनाव की अपना नया चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं पूरी पब्लिक जिस तरीके से वोट दे करके और पूरा भारत का बागडोर जो है मोदी के हाथ में दिया है, इस तरीके का सत्ता तो फिर आना नहीं चाहिए, क्योंकि न कांग्रेस के पास कोई लीडर है, जान लीजिएगा हमारे पास। ये जो आपकी पार्टी चल रही है, इनके में भी आप देख लो, नीचे से ऊपर कोई संभालने वाला। अभी थोड़े दिन पहले इनको पूर्ण बहुमत से ये दिल्ली का जो है सीएम बनाया गया अरविंद केजरीवाल को, ठीक, लेकिन इनके में भी विकसित हो गया। ये अभी गए थे एक्सरसाइज करने के लिए, इनको तक कोई तकलीफ था, ये कौन सा जगह गए थे, उसके बाद उसी में दुनिया भर का नाटक चल गया। लेकिन ये अपनी जगह को संभालना है, इतना बड़ा हमारा देश है। आप लोग तो एक ग्रेड के छात्र हो, जिसको स्वर्ण की चिड़िया माना जाता था, इस पर कितने बार मुसलमानों ने राज किया, विदेशियों ने राज किया, फिर भी अभी किसी देश के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो हमारे देश को टक्कर दे सके। तो भैया अपने कांग्रेस में कोई वो थे, लाइन पाइन थी, बड़े लोग थे, अपने राहुल का दामाद देख, ये जीजा वाड्रा, हाँ, इनका देखे इतिहास, इनकी इतिहास देखी, थोड़े दिन में कई कितने करोड़ों के मालिक बन गए। आपका क्या मानना है, जैसे भाजपा आई है तो उससे बदलाव क्या क्या हुए हैं देश में, क्या हो सकते हैं? यही तो एक ऐसी पार्टी मोदी की, अटल बिहारी वाजपेयी जो एक नंबर के लीडर थे भाजपा के, इनके जाने के बाद ये मोदी एक ऐसे हैं जिन पे लोगों ने, हमारा देश ने भरोसा रखा है, इनको सत्ता दिया है हाथ में। यदि इनसे सुधार नहीं हो पाई तो समझ लें कि ये हमारे देश का तो ये बहुत बड़ा पतन होगा ही होगा। और यहाँ देख लें, हिंदुओं का नसबंदी प्रलोभन दे करके कराया जा रहा है, ठीक, मुसलमान नहीं करते, प्रलोभन नहीं है इन लोगों का। अभी आप देख लो कितने आगे हैं, इनकी कम से कम 20 करोड़ की आबादी है हमारे ये इंडिया में। और जहाँ भी इनका विरोध होता है वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का, तो भाजपा क्या बदलाव क्या लाएगी? बदलाव गरीबों से लेकर के ये जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, महंगाई, तरह तरह का प्रलोभन है, लाइनें हैं, सुख सुविधाएं हैं, ये